Drishti, you may please. Okay, sir. The world is full of diamonds and gems, and it is our pleasure to have some of them in our event today. I believe that a good event never ends in the world. It only takes a pause and keeps us waiting for the next edition. Good morning, everybody. Today we have gathered here on the occasion of the 7th edition of Anveshana in Delhi NCR this year. On behalf of Agastya International Foundation and Synopsis, I, Drishti, take this opportunity to extend a pleasant welcome to everyone who are present here with us today. I have been one of the prize holders in the previous editions of Anveshana and hosting this event for the second time. It gives me immense pleasure to be a part of this wonderful journey of Anveshana again. Today, on this occasion, we are highly honored by the presence of our distinguished guests. धन्यवाद दृष्टि। आज की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बड़े सत्कार। परस्पर आदर का भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है और सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है। इसी संस्कृति को संजोते हुए मैं प्रिया गुप्ता अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से सभी को नमस्कार करती हूँ। ये ढंग कहाँ से लाए हम, ये नेक नियति के मंसूबे है, नमन पधारे आप यहाँ, स्वागत है इस उत्सव में। इसी क्रम में मैं आप सभी अतिथि गणों से अनुरोध करती हूँ कि जब अपनी उपस्थिति से बच्चों को प्रोत्साहित करें। किसी ने क्या खूब कहा है, अतिथि देवो भव, अर्थात आप सभी अतिथिगण हम सबके लिए देवतुल्य हैं। हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि जब आपका स्वागत सम्मान हो तो कृपया अपने फोन को अनम्यूट करके एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करें। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन श्रीमान साई चंद्रशेखर से आग्रह करूंगी कि वह हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्रीमान एन रामचंद्र, जॉइंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति का स्वागत करें। A warm welcome, sir. Shri Ramchandra, sir. अब मैं जनरल मैनेजर प्रोग्राम श्री सुरेश टी.एस. से आग्रह करूंगी कि वह सिनॉप्सिस से आई मिस शैला सुल्ताना, लीड ह्यूमन रिसोर्स का स्वागत करें। मैं श्रीमान शिव कुमार चौधरी, रीजनल हेड अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से आग्रह करूंगी कि वह मिस अलका शेरावत, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग मैडम। अब मैं श्रीमान आलेख द्विवेदी, सीनियर प्रोग्राम लीड अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से आग्रह करूंगी कि वह श्रीमान साई चंद्रशेखर का हम सभी की ओर से स्वागत करें। अब मैं श्रीमान संजीव, साई सर। Thank you. Thanks a lot. अब मैं श्रीमान संजीव कुमार झा, IMT लीड अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से आग्रह करूंगी कि वह श्री सुरेश टी.एस. का हम सभी की ओर से स्वागत करें। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू संजीव। हमारे बीच अनुभवी जूरी मेंबर भी उपस्थित हैं। मैं श्रीमान रमेश सिंह, टीचर एजुकेटर अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से आग्रह करूंगी कि आप हमारे बीच जूरी मेंबर में उपस्थित श्री दीपक राय, PhD स्कॉलर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना का स्वागत करें। दीपक सर, स्वागत है आपका इस अन्वेषणा के मंच पे। आप बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ जूरी के मेंबर के रूप में प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपका स्वागत है इस समारोह में। अब मैं श्रीमान विकास तिवारी, YIL प्रोग्राम हेड अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से आग्रह करूंगी कि आप हमारे बीच जूरी मेंबर में उपस्थित श्रीमान अमित पांडे, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर का स्वागत करें। वेलकम अमित पांडे सर।
हमारे बीच इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी विद्यालयों से उपस्थित विद्यार्थियों, टीचर्स, प्रिंसिपल, रिसोर्स पर्सन और सरकार की तरफ से आए अतिथिगण, अगस्त्य परिवार के सदस्य और यूट्यूब से जुड़ी हुई ऑडियंस का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब अन्वेषणा कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, डाल के रंग वो पुरानी तस्वीर बदल देते हैं, कुछ लोग अन्वेषणा में अपनी पहचान छोड़ देते हैं। Once again, a hearty welcome to all the dignitaries, participants, and audience. To begin with, let me present a brief note about Anveshana. It is an event launched to build a bridge between the two strata of education, the engineering students as the mentors and the school children as the mentees, wherein the curiosity of the school children are invoked through the mentoring process, making them able to understand science better and easier. This unique idea has proven to be a great success and vastly appreciated by all. It is also an event to be the first of its kind in the nation. It is an exclusive event which was first launched in Bangalore in the year 2012, followed by its launch in Hyderabad in 2014, in Delhi NCR in 2016, and in Mumbai in the year 2019. This event has accumulated a huge response in Bangalore, Hyderabad, Delhi NCR, and Mumbai, benefiting not only the participating students but also to hundreds of school children who visit the fair. After having successful events all these years, we are going to have the 11th edition in Bangalore, 9th edition in Hyderabad, 4th edition in Mumbai, and we are today having the 7th edition of Anveshana in Delhi NCR this year. हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 20 इंजीनियरिंग कॉलेज और 40 सरकारी विद्यालयों से आए विद्यार्थियों की आकांक्षी टीमें हैं, जो इस वर्ष इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत जनरल मैनेजर प्रोग्राम श्रीमान सुरेश टीएस से करना चाहती हूँ, जिन्होंने गत 16 वर्षों से अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन में अन्वेषणा, जिज्ञासा, YIL, ऑपरेशन बसंता जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में नेतृत्व किया है। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि वह बच्चों के बीच आकर अपने अनुभव से हम सभी को प्रेरित करें। श्रीमान सुरेश टीएस सर। Thank you, Priya. Namaste and good morning to everyone. It's my pleasure to be part of this program today here, the inaugural program of Anveshana 2021-22, Delhi NCR edition. I believe that everyone present here are doing good, and especially participants are super excited to showcase their project results in the form of viable solutions to the world. So this program is supported by one of our corporate donors, Synopsys, from past 10 years, continuously all over this nation. So we are doing this program in mainly 4 locations: Bangalore, Hyderabad, Delhi, Mumbai, 4 locations. Supporting to Bangalore edition, there is a regional event in Dharwad, and Hyderabad event is supported by one of the regional events in Chittoor again. So saying that, I would like to take this golden opportunity to welcome our chief guest, Shri A. N. Ramachandra, former Joint Secretary, Navodaya Vidyalaya Samiti, and Shara Sultana from Synopsys, a great supporter of this program. And also I feel, grateful to have the presence of our beloved Executive Director, Shri Sai Chandrasekhar, who is an inspiration to all of us in Agastya. So I also take an opportunity to welcome our jury members, Deepak Rai sir, Shri Amit Pandey sir, professor from Global Institute of Technology, Jaipur, Anjali Pandey, who is the first prize winner of 2021 Anveshana last year,
So we have taken 2 jury members as prize winners from last year's slot. One is Anjali Pandey from Sagar Institute of Technology, Bhopal, and Kanchan from GD Goenka University, Gurgaon. So the jury panel is going to invest their time and effort in assessing the project and giving their valuable input for the next 3 days. I take a great opportunity to welcome all these people. I also like to welcome all the teaching staff from schools and engineering colleges. Obviously, it goes without saying that a great effort went in preparing this event today, because the preparation could not happen, overnight. Appreciating Anveshana team and North One team members, I would like to welcome all the Agastya people. Like to appreciate all the students for their presence, patience, and taken time to participate in Anveshana. And I wish them a very good luck. Thank you for providing this opportunity. Thanks again, and over to Priya and Drishti. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it's time to formally inaugurate the program. For this, I will invite Shri A.N. Ramchandra, Youth and Schools Expert at the Karta Initiative, Joint Commissioner at Navodaya Vidya Samiti, Ministry of Education, India, Senior Consultant at NVS, and Head of Administration at Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Government of India, to do the honors. Please welcome, sir. Are you expecting me to speak? Sir, it will be a digital lamp lighting. I'll request the technical team to please. Please do this. Yeah, please. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संप्रदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संप्रदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपा ज्योते नमस्तुते दीपा ज्योते नमस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संप्रदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संप्रदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपा ज्योते नमस्तुते दीपा ज्योते नमस्तुते. Thank you all for the wonderful beginning. Moving on, it's time to have a few words of wisdom by Ramchandra sir and address the gathering at today's event. Thank you, Drishtiji. Our respected dignitaries who are blessing this occasion to initiate this program. Madam Shala Sultana ji, Professor Sai Chandrasekhar ji, Suresh ji, and all the dignitaries, jury members, and coordinators, as well as most importantly, the participants from various colleges and schools. Every one of us are aware that in the prevailing situation, the pressure on the student is to understand what the teacher conveys, whatever the experience teacher exposes. But the melody is students want to experience by themselves independently, and also to learn the things through their own experiences
through their own way of experiences. Both these two issues are very important. In this scenario, in the restrictive environment of the school we get a very, very limited opportunity for the students to attempt for the experiences they desire for. And now that the collaboration between the engineering colleges and the students in the school created by Agastya probably was the most fascinating thing, which I came across in the beginning of the pandemic period in Delhi. We had a very nice program wherein the students came out with tremendous projects, in the sense that beyond their age, whatever the projects they have prepared, it appears to be beyond their age. Of course, they're all supported by the engineering college students. I had detailed discussions with the project initiators or the students from the school. They were having the deep knowledge of what they were doing. This probably is one of the fascinating events for the students. When they experience this, the deeper interest in the subject, deeper interest in the concept, deeper interest in the passion they would like to pursue evolves. That will give the student a great occasion to launch their career or their perception to their career. With this, probably with Agastya having started this activity, I think is the most great opportunity for the students to have to display their own talent. What I would like also to mention that this being a trend, small trend, maybe around 30 or 40 students come to the forefront of the environment here. But in the background, when one student is preparing in the school, probably he would have influenced at least 20 people around him who are seeing what this student is doing. And that will initiate the process of innovation amongst the students. Innovation, conducting innovation or research-oriented learning will help the students to independently graduate themselves as the strong learners. So that is, in that way, I think that the programs initiated by Agastya have multiple and vibrant effect in the school system as well as in the college system. Another point I just wanted to mention that the college students mentoring the school students is one of the most important link in the educational system. The reason being, the school students do not know where they are actually headed towards. This kind of a program will give the students an opportunity to envision what exactly is going to be the future stage of the learning pattern, as well as what is the purpose of their journey, and also where they are heading towards. This visibility will give tremendous confidence for the school students. Being a school person, I always think that somebody from the institution of higher learning hand-holding the school is one of the most fascinating link, which will make the school education more enjoyable, more comfortable, and more safer, as a matter of fact. Why I am using this safer word is that once again, in the restrictive environment of the classroom scenario situation, there are certain guarded activities going on, not allowing the students to venture for understanding or attempting to learn more and more or beyond their age. I always keep telling that in a school system, we have at least during the school system,
we have at least 5% of the students who can do much more than their age. Probably they would be 2 to 3 years ahead of their batchmates. They should get some challenging opportunities. So that way, the content and contest, as well as the challenge, all the three things available to them with various levels of understanding in the 3x3 grade, the students will get much of the comfort. And thank you, Agastya, for arranging these kind of event. And thanks for the technical team. Despite pandemic, you have made it happen virtually and did not burst to the challenges posed by the corona. And you have made it to made it comfortable for the learners to continue their pursuits, irrespective of the challenge posed by the nature or somebody, I do not know. Thanks, Agastya, for involving me under this program. Thank you very much. Thank you so much, sir, for those knowledgeable words. Moving ahead, now I request Mr. Sai Chandrasekhar, who is Executive Director Operations in Agastya. He has over 20 years of experience in the IT industry in India, the Asia Pacific and Japan region. He has wide range of experience spanning across functions like sales and marketing operations. Now I would request you, sir, to share your thoughts on importance of United Nations Sustainable Development Goals, which are also the theme of this year's Anveshana's event, and shed some light on the recent developments in Agastya, both in terms of program and expansion. Please welcome, sir. Thanks, Drishti, and a very warm welcome to everyone here. I'm really thrilled to see Drishti here. The fact that one of the alumni of Anveshana is comparing for this, I think means a lot. It goes to show that how the involvement is going beyond just the event and into other spheres. So congratulations, Drishti, and very glad to see you here. Thank you so much, sir. मैं प्रिया जैसा शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए. So सबसे पहले a very warm welcome to Shri Ramchandra sir, Madam Alka Sharawat and Shala Sultana madam. I think we've been very fortunate over the last several years to receive support and help from a lot of people across the country in various fields, as well as the governments of various states and the education departments. And we are very, very humbled by that and very grateful for all the support. Suresh has already mentioned about the support that we've been receiving from Synopsys for the last decade plus, and extremely grateful for this support. और मैडम अलका शरावत पिछले कई सालों से हमें आपसे और दिल्ली की सरकार से बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, तो हम आपके आभारी हैं, आपके डिपार्टमेंट के आभारी हैं. Thank you very much for all the support that you've been giving. I had the good fortune of meeting you a few years back. अभी कोविड के वजह से पिछले 2-3 साल I've not been traveling and hope to meet all of you soon. अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से हम ये अन्वेषणा का टॉपिक को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक किया है. ये जो यूएन एसडीजी कहते हैं शॉर्ट में, सन 2015 में ये एग्रीमेंट आया था यूनाइटेड नेशंस में कि अगले 15 साल में, मतलब सन 2030 तक हमें ये 17 जो गोल्स हैं, इसमें कुछ गोल्स रखे हुए हैं हर गोल में कि कहाँ तक पहुंचना है. ये बहुत जरूरी है फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस प्लैनेट. और अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी समस्या आप देखो, वो किसी ना किसी तरह इन 17 गोल्स में लिंक हुआ होगा. आप अभी अन्वेषणा में भी जो भी एंट्रीज आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो everything will be linked to that.
तो इसका मकसद ये है कि वी वांटेड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड ये जो है, इट्स इम्पोर्टेंट दैट द होल वर्ल्ड वर्क्स टुगेदर इसका हल निकालने। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन कंट्री टू डू दिस, सो ईच वन ऑफ अस हैज टू डू आवर बिट। जैसे कि कहते हैं कि बूंद बूंद मिलके समुंदर बनती है, तो वी शुड नेवर थिंक दैट दिस इज ओनली सच अ स्मॉल थिंग कि इसका कैसा होगा इम्पैक्ट। And that is the reason why we brought this UN SDG goals into the picture here. और आप लोग जो अन्वेषणा में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एक समस्या लेके उसका हल निकाल रहे हैं, I think in that process you are contributing big time to meeting this UN Sustainable Development Goals by 2030. मुझसे कहा गया कि अगस्त्या के बारे में भी थोड़ा बताएं। आई थिंक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो हमारा कुप्पम का कैंपस है। इट्स अ लर्निंग लैबोरेटरी, लर्निंग इन वेरियस डिमेंशंस। अभी पिछले 20-22 साल में हम तकरीबन 1.7 करोड़ बच्चों तक पहुंच सके हैं, और हमारा मकसद है कि अगले कई सालों में, मे बी 8-10 साल में, हम इसे 10 करोड़ बच्चों तक ले जाना चाहते हैं। तो ये क्या ऐसी हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा। हमें दूसरे ढंग से काम करना पड़ेगा और काफी लोगों की सहायता चाहिए हमें ये सब 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचने के लिए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अभी पूरे देश में जो स्कूल जाते हैं बच्चे, तकरीबन 25-30 करोड़ बच्चे होंगे अपने भारतवर्ष में। तो अगर हम 10 करोड़ तक भी पहुंचे, फिर भी वो आधा से कम है इन टर्म्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। एंड सो अब समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टास्क है। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए हम थोड़े नए तरीके से काम करने की सोच रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि हम खुद अपने आप इतने बच्चों तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम काम करेंगे थ्रू द गवर्नमेंट्स, थ्रू वेरियस अदर NGOs, थ्रू सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस कि हम इतने बच्चे तक पहुंचे। तो हम अभी पिछले साल हैदराबाद में नवम नाम का एक संस्था का स्थापित किया है। इसमें अगस्त्या और प्रवाहा फाउंडेशन दोनों मिलकर ये संस्था स्थापित हुआ है। इस संस्था के द्वारा अभी और देश में और 10 सेंटर्स खोलने का इरादा है हमारा। ये एक तरीका है। अभी यहाँ पे जो आए हैं, सम ऑफ यू, आपको मिला होगा एक्टिलर्न नाम का एक बुक और होम लैब किट्स। इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे बच्चे जिन तक ये मोबाइल वैन नहीं पहुंच सकती है, उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे हैं इनिशिएटिव्स, पर मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा। बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद ये है कि अगले 8-10 साल में हम कम से कम 10 करोड़ बच्चों तक हम पहुंचे। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से काफी तकलीफ हुई है, काफी नष्ट हुई है, कई फैमिलीज को बहुत कठिनाइयां हुई है। Many of us have lost some near and dear people. पर कहा जाता है कि जब एडवर्सिटी होता है तभी हमारा लर्निंग सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप थोड़ा सोचेंगे पिछले 2 साल के बारे में कि ये कोविड की वजह से द होल इनोवेशन कोशेंट जो है इस दुनिया में, इन माय व्यू इट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, काफी बड़ी है। And at all levels, whether time taken to develop a vaccine going from 10 years to 1 year, or a small thing in a household on how we do some things differently. So, though end of spectrum, everywhere, I think innovation has become huge and it has kind of become part of our DNA, if I can say so. So, yeah, in one sense, COVID has helped in driving innovation in a big way, in my view.
अभी अगर आप देखेंगे ये अन्वेषणा में जो आप प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, जैसे क्या इनसे क्या मिलता है हमें? अभी 2 साल पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है डावोस में, वहां पे दुनिया के सबसे मशहूर सीईओ से ये पूछा गया कि अगर जब आप किसी को अपने कंपनी में हायर करना चाहते हैं तो आप क्या देखते हैं उनमें? तो उनमें से सभी लोग 3-4 ऐसे पॉइंट्स दिए जो कॉमन है सब में और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कहा क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये चीजें उन्होंने बताया कि ये बहुत जरूरी है, एंड दे लुक फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन दे वांट टू हायर पीपल। और अगर आप देखेंगे तो अन्वेषणा में एक्चुअली एज यू पार्टिसिपेट इन दिस, यही ट्रेट्स है जो आप में डेवलप होंगे। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये यूएन एसडीजी गोल्स से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है काफी मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो वो कभी के सॉल्व हो गए होंगे। तो वी नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। तो दिस यू गेट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और जब आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताना चाहते हैं जूरी को, तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एक बढ़िया प्रोजेक्ट किए होंगे पर शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या है, फिर आई थिंक द फन इज लॉस्ट इन दैट। So these are things which are very, very important. And this is what Anveshana is bringing out. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ट्रीट दिस अन्वेषणा एज अ स्टार्ट पॉइंट। इट इज नॉट द एंड कि अभी आप यहाँ पे आए, हम अपना प्रोजेक्ट दिखाएं और अपना काम हो गया, प्राइज मिल गया, हमारा काम हो गया। नहीं, the process of innovation starts here, it doesn't end here. ये बहुत important है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे आपका solution दिखा रहे हैं, I'm sure all of us agree we can still work on it and improve it further and further and further, and also expand the problem statement so that you can build on your project. So this is one simple and sincere request I make for all the participants, that please treat this as a start point, enhance your problem statement, and then build on your project. And I am sure you will learn a lot in that process. So I would kind of stop here. I want to congratulate the Agastya team for continuing to put up this great event. I want to thank Synopsys for their continued support on this. I think children are the centerpiece of Anveshana, but the next most important people, I think, is the jury. They do a phenomenal job. I can tell you it is a very, very taxing job. Needs a lot of patience कि वो सभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, उनको अपना विचार बताते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ये एक काफी टायरिंग जॉब है। सो आई वुड जस्ट like to extend my heartfelt thanks and gratitude to all the jury members for agreeing to be a jury for this event and helping the children in their path. So have a great event, and back to you, Drishti. Thank you. Thank you so much, sir. Moving on, the team of Anveshana has a tradition of launching a book, which is the compilation of the details of the project taking part in Anveshana. This book, abstract book, acts as a souvenir for Anveshana. I request all the dignitaries to unveil the book.
Thank you, everyone. It is our utmost pleasure to have Ms. Shala Sultana, Lead of Human Resources at Synopsys India Private Limited, among us. She is a resolute and committed HR professional, offering 18 years of accomplished exposure, especially in the realm of human resources and corporate social responsibility. An effective communicator and team player with excellent relationship management and interpersonal skills, committed to the success of an organization with strong ethics and values, and excellent credibility with superiors, peers, team, and internal customers. Please welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. It's a pleasure to be a part of this inaugural function of Anveshana 2022. And thanks for the lovely introduction, dear. I would pick up from where we just discussed about curiosity and innovation. Chandrasekhar sir ने काफी points and highlights डाले हैं इस पे. So I would like to start with the famous quote by Albert Einstein, who said that the mind that opens to a new idea never returns to its original size. So I would earnestly request सभी बच्चों से, चाहे वो स्कूल के हैं या कॉलेज के, कि always be curious. Curiosity will conquer fear even more than bravery will. So, keep on innovating, keep on thinking of new ideas. It will open a lot of new doors for all of you. Try doing new things, because it's all a beginning of a new journey when you start thinking and you start innovating. We have been partnering with for Anveshana for quite some time, and just wanted to highlight that Synopsys as an organization is at the heart of innovation. And we continuously, our engineers work to change the way people around the work and play, right? इतने सारे innovations जो होते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे engineers का भी होता है. And this is for all of you students, that is why I'm trying to speak in Hindi, कि बहुत नई चीजें सोचें और अपने end से जितना क्वेश्चन कर सकते हैं अपने फैकल्टीज से, अपने सीनियर्स से करिए, और जितना इनोवेट कर सकते हैं आप अपने एंड से करिए, बिकॉज इनोवेशन करिएगा तभी आप स्मार्ट चीजें बना पाइएगा, जिससे you can bring some changes in this world, right? And it resonates very well with our organization, which is like heart of innovation, right? We invest a lot in innovation. तो चंद्रशेखर सर के बहुत सारी बातों से मैं रेजोनेट कर पा रही थी, क्योंकि हम भी अपने इंजीनियर्स को यही बताते हैं, या हमारे यहाँ कोई कॉलेज के न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कि हमेशा न्यू आइडिया सोचते रहे, हमेशा इनोवेट करते रहे. एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ न्यू changes that we can bring into the world. With that, I really want to thank all of Anveshana team for their work that they have been doing for so long. Thank you so much. थैंक यू मैम. आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हम सभी को, और आई होप ये सभी बच्चों को एक अलग दिशा की तरफ लेके जाएगा. सो अब आगे बढ़ते हैं. जीने का कोई मकसद हो, कोई लक्ष्य मिले, कुछ चाह मिले, श्रीमान अगर आप कुछ मार्गदर्शन करें तो हम सब भटकों को राह मिले. हमारे बीच जूरी मेंबर की तरह उपस्थित श्रीमान अमित पांडे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में अन्वेषणा रूपी प्रोजेक्ट को गाइड किया है, और उनके विद्यार्थियों ने एक बार प्रथम पुरस्कार और एक बार सांत्वना पुरस्कार जीता है. मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वह इस बार भी अपने बहुमूल्य शब्दों से बच्चों का हौसला बढ़ाएं और जूरी प्रोसेस के बारे में बच्चों को समझाएं. Hello. Thank you, ma'am.
जी सर। पिछले 3 सालों से मैं अन्वेषणा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और मुझे खुद को इन प्रोजेक्ट्स को देख के और इनसे जुड़ के बहुत अच्छा फील होता है। जिस तरीके से बच्चे इसको प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं और करते हैं, उसे देख के लगता है कि स्कूल के बच्चे खास करके जिस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, उससे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो सकता है। हमारा जो प्रोजेक्ट कंपटीशन है, इसमें 10 मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये होगा कि हाउ वेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कंसीव्ड। 10 marks will be given for that. 10 marks will be given for how well conceived its solution is, कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से तैयार किया है उन्होंने। 10 मार्क्स इस बात का होगा कि प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है उसको लार्जर स्केल पे कितना एक्सपेंड किया जा सकता है। 10 मार्क्स होगा कि मॉडल प्रोटोटाइप कितना तैयार है, उसका वीडियो जो वो दिखाएंगे उसमें किस तरीके से वो काम कर रहा है, इस बात के लिए दिया जाएगा। उनका जो आइडिया है वो इनोवेटिव है या बोरो किया हुआ है, इस बात के लिए 10 मार्क्स है। कितना फिजिबल है उनका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए, इसके लिए 10 मार्क्स है। सबसे ज्यादा 30 मार्क्स इस बात पे दिया गया है, जो हमारा फोकस है अन्वेषणा का, कि स्टूडेंट्स कितना सीख पाए उस प्रोजेक्ट के थ्रू, इसके लिए हमने 30 मार्क्स रखा है। एंड 10 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट का कितना है। टोटल 100 मार्क्स इट विल कंसिस्ट। थैंक यू प्रिया मैम। थैंक यू सर। आई होप बच्चों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हाँ, मैं दोबारा कहाँ भी बोल पे। सकता। जी सर। तो ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हमारे बीच में जूरी मेंबर दीपक राय, जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जूरी प्रोसेस के टाइम पर जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो वो जल्दी ज्वाइन होंगे। सो ओवर टू यू दृष्टि। Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would like to invite the first prize winner of Anveshana 2021, Miss Anjali Pandey from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal, to share her experience of Anveshana with us today. Thank you, everyone. Good morning. My name is Anjali Pandey, and currently I am pursuing BTech from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. So, my experience with the Anveshana was wonderful, and I learned a lot of things during my competition. And if I'm talking about my experience, so last year I participated in this competition, and luckily I won that. And इनिशियल डेज जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और थ्रू आउट माय प्रोजेक्ट आई वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। सो मैंने एक प्रॉब्लम को राइज अप किया था, दैट इज एजुकेशन, एंड लकली हमने वो प्रोजेक्ट इन्वेंट किया जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो मेरे और मेरी टीम जो पार्टनर थी, उनके बस हम दोनों के मन में ये था कि हम लोग को अन्वेषणा जीतना है, एंड हम कॉम्पीट करेंगे टीम मेंबर्स के साथ। ये माइंडसेट के साथ हमने पार्टिसिपेट किया था। बट जैसे जैसे अन्वेषणा कॉम्पिटिशन के डेज आने लगे, नजदीक आने लगे, और जब हमें स्टूडेंट्स मिलने लगे, टीम्स बनने लगे, तो हम लोग के अंदर वो कंपटीशन से ज्यादा एक इमोशन बन गया हमारे लिए कंपटीशन की। हमने जाना कि उस चीज से अवेयर हुए कि व्हाट अन्वेषणा इट इज, एंड जो वो इनिशिएटिव लिया अगस्त फाउंडेशन ने टू एक गैप फिल किया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में एंड स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में। सो वो चीजों को मैं काफी अप्रिशिएट करती हूँ। एंड मेरे थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो टीम मेंबर्स थे, दूसरे टीम मेंबर्स थे जिनके साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं,
उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानना, उन्होंने क्या यूनिकनेस अपने प्रोजेक्ट में की है इसके बारे में जानना। सो वो जर्नी मेरे लिए काफी बहुत ज्यादा ही अच्छी रही है और वो मैं कभी भूल नहीं सकती जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जो स्टूडेंट्स के उनकी जो हम क्लासेस लेते थे, तो टू बी ऑनेस्ट द स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। वो हर चीजों को इतनी उत्सुकता रहती थी उनके अंदर जानने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे यूज कर सकते हैं, और उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाना। और वो इतने जल्दी चीजों को कैच कर लेते थे कि हम लोग को लगता था कि बहुत टाइम लगेगा बच्चों को इन चीजों को सिखाना कि हम लोग क्या किस चीज में वर्क कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए काफी हम लोग को टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज को उनके माइंड में डालने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी जो 8 क्लास के बच्चे उनके अंदर इतना कुछ अभी नहीं होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। वो बस अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में नॉलेज होती है उनको। तो उस जो हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट का नॉलेज दिया उनको, तो उन्होंने काफी जल्दी कैच कर लिया। उनके माइंड में बस क्वेश्चन काफी अच्छे आते थे कि ये कैसे वर्क हो रही है, तो HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में उनको बताना, और वो खुद भी पढ़ते थे चीजों को। वो कुछ चीजें जब नहीं आती थी वो पूछते थे, तो वो सब बताने में काफी अच्छा लगता था। और ये जब हम लोग ने जब फिनाले आया, जब हमने अपना प्रेजेंट किया प्रोजेक्ट, तो बस हमने स्टूडेंट्स को इतना ही बताया था कि अपना बेस्ट देना, कोई बात नहीं, जीते हारे बस डरना मत, बेस्ट देना, जो आपको आता है अच्छे से बोलना। तो उन्होंने काफी अच्छा प्रेजेंट किया प्रोजेक्ट को। और जब हम जीत गए तो जो हमारे फेस पे जो खुशी थी, उनसे ज्यादा खुशी तो उन बच्चों के फेस में थी। वो काफी मोटिवेट हुए इस चीज को लेकर। बच्चे बोलने लगे कि दीदी नेक्स्ट ईयर फिर से हम पार्टिसिपेट करेंगे और फिर से कुछ अच्छा करेंगे और जीतेंगे इस कंपटीशन को। तो वो चीज को देखकर मेरे और मेरी पार्टनर थी, उनके दिमाग में काफी खुशी हुई कि हमने कुछ अच्छा किया, बच्चों को काफी नॉलेज हुआ। और ये बॉन्ड सिर्फ उतने ही दिनों तक नहीं था हमारा, बच्चों के साथ अभी भी हम काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। उनको जैसे कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि ये कैसे हो रहा है, तो वो हमसे पूछते हैं। तो ये चीजें काफी अच्छी लगती है कि हम किसी बच्चों को कुछ चीजें यूनिक बता रहे हैं। And I really appreciate the Agastya Foundation and Anveshana for doing a great job to giving the awareness to the student about the technology that we are using. And also I am very grateful to be part of that competition, and it is more like a family for me. And thank you. That's all about me. Thank you about my experience. Thank you, Anjali. Thank you so much. Now I would like to invite Miss Kanchan, the 4th prize winner from GD Goenka University, to share her adventure of Anveshana with us today. Hello everyone. Am I visible and audible? Yes, Kanchan, you are visible and audible. I'll just welcome everyone, all the dignitaries and all the participants in this wonderful event. I'll start with thanking this Agastya team for organizing this wonderful event named Anveshana, which basically means discovery. You know, this is the event which give us the opportunities, students like us to present their ideas to such a curious mind. During this entire tenure of mentoring, I myself found growing and learning every single day a new thing while interacting with the students. During meet physically with the student, but due to the COVID, I agree, it was not possible, but it was more learningful and more meaningful in the meetings, because students don't face that fear to ask the questions. They can ask anything, they can write anything on the groups, whatever they feel like. This is the best part I feel about the Anveshana. This give us, what I personally feel is that Anveshana is a event of mutual learning. It is not about the final days of the presentation. The main event of Anveshana is this mentoring tenure, which happen after the August or after the allocation of the teams. Students allotted to us was so curious, like we need to put efforts, we need to start from the beginning, right? Because students are not aware about the concepts, they don't know much about the technology, but their question why and how, this
why and how make us feel like we need to start from the beginning. We need to get down to the initial things which never we thought of. We need to search those things. We need to, we need to put more efforts rather than mentoring them. We need to find out the ways, the best way we can put our idea into the students. And trust me, during this entire, I am a part of an Anveshana from last 2 years, and the students allotted to me are so curious that they have the questions which I never thought. They give us settlement of our projects. They know, Didi, we can do this in this way as well. Di, agar hum ye karenge to what are the drawbacks of that? If we'll do best part I like about for during this Anveshana event for mentoring, what I feel is that I like that bond we share. I like that connection we made during this event. For me, success is not a set of event. Like what is the event you are participating is not success. It's just the what you are doing, how much efforts you are putting, how much you are gaining from this satisfaction and happiness you are getting from. For me, this event or this mentoring tenure of 3 to 4 months was so wonderful. It was so I participate every year in Anveshana. I put my projects every year just to interact with the student, just to get to know what basically how will student will react to our project, like, right? How will they see if we are giving some solution to any problem? Students are doing it in much better way. Like they can think us in a different way. When we get by a team, when we form a team, when Agastya allotted students, it basically gave us a set of idea, or I have my project. Team will have 4 minds working on the same thing. We'll have 4 questions for the same. Like if I'm sharing one point, there will be 4 counterpoints from the students as well, and from the faculties or the teachers from the school as well. So this is the best part. Like we get to know, we get more points to write, we get more points to work on that. This is the best part. Thank you. At last, I'll just pay thank you to this team, Agastya, for giving me this opportunity to share my words and to participate as well. Thank you so much. It is really a wonderful event. And in the future, I'll love to work along with you guys if I get the chance. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Thank you so much. अगस्त्य और सिनॉप्सिस की ओर से मैं एक बार फिर सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से कुछ समय हमारे प्रोग्राम को दिया और 2022 की अन्वेषणा को एक नई शुरुआत दी। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, उगता हुआ सूरज हमें बहुत कुछ सिखाता है। कट गई रात काली, अब नया सवेरा लाई है। सुबह की उजाली धूप मन को ऊर्जा दे जाती है। कट गई रात काली, अब परीक्षा की बारी आई है। निर्णायक प्रक्रिया बहुत शीघ्र ही शुरू होने वाली है। अति सभी टीमों से अनुरोध है कि वे अपने प्रोजेक्ट के समय प्रिया मैम, यू आर ऑन म्यूट। प्रिया, आप म्यूट पे हैं। सॉरी। अगस्त्य और सिनॉप्सिस की ओर से मैं एक बार फिर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से कुछ समय हमारे प्रोग्राम को दिया और 2022 की अन्वेषणा को एक नई शुरुआत दी। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, उगता हुआ सूरज हमें बहुत कुछ सिखाता है। कट गई रात काली, अब नया सवेरा लाई है। सुबह की उजाली धूप मन को ऊर्जा दे जाती है। कट गई रात काली, अब परीक्षा की बारी आई है। निर्णायक प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। सभी टीमों से अनुरोध है कि वे अपने प्रोजेक्ट के समय सीमा का ध्यान रखें और प्रोग्राम में बने रहें। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिसका पालन आपको करना है। जब सॉरी टू इंटरप्ट, इससे पहले क्या हम अलका शेरावत मैडम से कई शब्द सुन सकते हैं? यस, अगर अलका मैम इज प्रेजेंट। यस मैम, शी हैज जॉइंड। आप उनको प्लीज इनवाइट कर सकते हैं। ओके सर। सो मैम के लिए कुछ लाइन मैंने लिखी हैं।
परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो। परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार Due to करो। some urgent meeting, Alka madam has to leave. She has joined back, and please invite her to share some Yes, sir, kind yes. words with students and all of us. परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। हीरे की तरह दिल्ली में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है, ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी श्रीमती अलका शेरावत मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बच्चों शब्दों से बच्चों को प्रोत्साहित करें। Thank you so much for your kind words, and very warm good morning to all of you, and heartiest congratulations to the chief guest and other dignitaries who are attending this function. It gives me an immense pleasure to be a part of inauguration function of Anveshana 2022. It is a great initiative from Agastya Foundation to bridge the gap between school students and students of engineering college to develop their creativity in the field of science. Our students have worked very hard in model making in partnership with college students. My best wishes to all the participants for their innovative efforts made by Team Agastya. Exhibition is to spark curiosity and creativity. Dear friends, the journey for last 2 years was not an easy task, and during pandemic situation, the Team Agastya Foundation worked really hard, and they imparted education through videos and online classes. So I really appreciate for them. I wish we all could join this physically, because it was really, we were wishing that we will attend this function physically at Bal Bhavan, but it is our hard luck, but it hardly matters. And I wish that next year more number of students they participate in Anveshana 2023. So best wishes to each one of you. And dear students, one more thing I want to share, that it is a competition. So no matter you win or lose, it is a great thing that you are participating in this exhibition. So don't lose your heart, and my good wishes to each and every participant in this exhibition. Thank you so much. Thank you for the honor you have given to me. थैंक यू मैम। हमें भी आशा है कि 2023 में और ज्यादा नंबर के साथ बच्चे पार्टिसिपेट करें। थैंक यू मैम। सो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो इस आपके कंपटीशन में होंगे। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करें तो दूसरे प्रतिभागी अपने फोन को कृपया म्यूट पर रखें। अपने प्रोजेक्ट की व्याख्या को संक्षिप्त रखें और मजेदार बनाएं। इसके लिए प्रत्येक टीम को 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 8 मिनट में प्रोजेक्ट का आप प्रस्तुत करेंगे और 7 मिनट जूरी मेंबर आपसे प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छे नेटवर्क की तरफ जाएं, जहां आप पर आपकी प्रस्तुति में कोई रुकावट ना आए। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने टाइम स्लॉट का ध्यान रखें और 15 मिनट पहले मीटिंग में जुड़कर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और मोबाइल को म्यूट रखें। बच्चों, एक लाइन और मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलें नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो सभी को धन्यवाद और सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। I'll be repeating the rules once again. Each team will get 15 minutes, in which 8 minutes will be allotted to the team members for presentation and 7 minutes will be for the jury members for the Q&A round. You are requested to be in a good connectivity area to avoid any kind of discrepancies between the event. You are requested to join 15 minutes prior of your given time slot. You are requested to mute your mics till the time the other team is presenting. With this, we are at the stage of concluding inauguration function. I will request the dignitaries to join the presentation by the teams. Before that, let's have a glimpse of the journey of Anveshana.
रोहित, आप अगर स्क्रीन में कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वीडियो नहीं दिख रहा है। सॉरी। Okay, so thanks all the
Thank you for watching this video. We will take 10 minutes break. After that, we will join with us with the participant. Okay.